We are waiting for other students to join. We'll wait for just 2 minutes. Yeah, Sayyid AG1641, you are the first. Zainab, you are second. Anirudh, hi. Z Gaming, hi. Anirudh, you are the third. Alvilo, hello sir. Developer69, hello. How are you? Good morning. Sunshine Creations, good morning. Hope everyone had their revision in the morning. We'll wait for 2 more minutes, my dear, and I'll start briefing up all the concepts right from chapter 1, unit 1 to unit 12. Darkfall edits, good morning. Sunita Devasi, good morning. Sunita Devasi, hope you had your revision. Zainab Mazhar, how are you? Bits Gaming, saponification कल explain हो गया बेटा. जो चीजें कल explain हो गई वो फिर explain नहीं करते बेटा. रात में लाइव सेशन में एक्सप्लेन हो गया बियॉन्ड 12. एक्चुअली देखिए, आई हैव अ थ्रोट प्रॉब्लम. ओके, राइट फ्रॉम योर मैथ्स एग्जाम आई हैव अ थ्रोट प्रॉब्लम. जो चीजें मैं एक बार एक्सप्लेन करा फिर सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर दूं. आप मेरे को क्या करिए, ये लाइव सेशन होने के बाद मेरे को कमेंट करिए. रात में मैं अवेलेबल था, ऑलमोस्ट 130 140 तक भी बच्चों के कमेंट्स के रेस्पॉन्सेज दे रहा था मैं. ठीक है, तो आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन. आई कैन नॉट रिपीट व्हाट आई हैव टॉट प्रीवियसली, सो प्लीज कमेंट मी. टाइम लैप्स के साथ मैं आपको बता दूं सैपोनिफिकेशन कहां पे है. यू कैन गो विद दैट. अंकिता, हैड योर रिविजन. सुनीता देवासी, हाउ आर यू? मोइन सिद्दीकी, आई एम डूइंग वेल. Dynamic edits, allotropes of carbon, important. You can say don't take a risk. 4 marks. In 4 marks it is important, sir. Hassan Sharif, 6 marks important. Yesterday I told beta. Okay, if you want I'll repeat again. बोल देता हूँ, देखो. I'm just looking for the book. Just give me a second. The book where I noted all the questions. Sunshine Creation, yesterday I discussed the saponification, my dear. In yesterday's class night I discussed saponification. You can watch that again. Mumtaz Begum, hello, hi. Developer X69, myopia, I'm going to say now myopia. Okay, Hassan Sharif, 6 marks, important questions. Okay, I'm saying it. Mahinara, refining methods ऑब्जेक्टिव्स में इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको उससे कोई आंसर नहीं आता, ओनली इन द ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो डू वन थिंग. बिट्स गेमिंग मैं भेज देता हूं बेटा, बट आप मेरे को कमेंट करना, क्योंकि अब अपन जितने कमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, सो लाइव सेशन एंड होने के बाद सारे कमेंट्स चले जाते पूरे, दे वैनिश अवे. ठीक है, जरीना बेगम 1707, मायोपिया, श्योर मायोपिया इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. श्योर आई विल टेल यू. 2 minutes tech 970, सर हाइब्रिडाइजेशन आता. देखो बेटा, एश्योरेंस कोई चीज का नहीं दिया जा सकता. हाइब्रिडाइजेशन अलग नहीं पूछ सकता आपको जो है N2O2 मॉलिक्यूल्स जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करो बोलता. जयशा जैनब, लाइफ कब तक है? देखो बेटा, लाइफ जो है मैं चैप्टर 1 से लेके यूनिट 1 से यूनिट 12 तक के कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है एक बार मैं रिकैप करवा रहा हूं. ठीक है, सो आई थिंक 40 मिनट्स में वो खत्म हो जाता, तो 7 o'clock लाइव खत्म हो जाती. आपका सेल्फ रिवीजन कर लो. मैं यूट्यूब पे अवेलेबल रहूंगा आपको कमेंट्स के लिए, और जो बच्चे चैनल मेंबर्स हैं उन लोगों को व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगा. आपको कोई भी डाउट है तो पूछिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. आई विल बी देयर फॉर हाफ एन आवर अप टू 7:30. शोएब के टेज, कुछ भी नहीं होता. आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक बार बता देता हूं, उसको एक बार आप चेक कर लीजिए, रिवाइज कर लिए क्या. देखो, यू कैन डू इट. ओके, मोइन सिद्दीकी, ग्राफाइट आता क्या? 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफाइट. ओके, यूजर्स के लिए. माहिनारा, रिफाइनिंग मेथड्स में ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो में बताया बेटा. ऑब्जेक्टिव एक्चुअली पब्लिक एक्सेस में नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो जहां पे मैं ये बताया आपके लिए मैं पब्लिक एक्सेस पे कर दूं. आप मेरे को इसके बाद मैसेज करिए. ओके, दर्श जैन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू दर्श जैन? हसन शरीफ,
I'm reading out the important questions. Okay, Zareen na Begum 1707. Uses of lenses is important, my dear. Uses of lenses, you have to do it. Z Gaming, I'll read out the questions, just check it out. Okay, if you have revised all those, okay, it's enough. Don't be scared. Okay, Aisha Homera paper presentation. Okay, I'll talk about the paper presentation as well after once we finish off this. मोइन सिद्दीकी लूप्स लॉ, देखो बेटा 3 दिन से हमारी लाइफ चल रही, सो फर्स्ट लाइफ में मैं बता दिया और आप मेरे को कमेंट करिए लूप्स लॉ जंक्शन लॉ दोनों साथ में आते, अलग लूप्स लॉ नहीं आता। आपको क्या आता है कि किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन करो बोल के बोल सकता, तो वो मैं उसकी वीडियो दे देता हूं, आप देख लीजिए। एक्चुअली उसके ऊपर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ पे। यस हमदान अहमद, आई एम डूइंग लास्ट मिनट रिवीजन ओनली बेटा, लास्ट मिनट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले मैं एक बार एक काम करता हूं, 246 मार्क्स के एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, आई विल डिस्कस दिस वन। इट्स आश एसपीडी ऑर्बिटल्स, yesterday I have explained, day before yesterday I have explained, my dear, we cannot repeat it again. हाइब्रिडाइजेशन मोहम्मद हुसैन, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 50-50, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना अनइंपॉर्टेंट भी नहीं है। मोइन सिद्दीकी साहब किरचॉफ्स लॉज, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो दे देता हूं, आप देख लीजिए। सैयद एजी 1641, नैनो ट्यूब्स 2 मार्क्स के लिए है बेटा। ओके, पढ़ना, छोटा सा आंसर है नैनो ट्यूब्स, अब कुछ भी नहीं करना है, कार्बन के कंपाउंड्स है, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है वो। ओके, एक्चुअली वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, आई कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन अ बोर्ड, मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, ऐसा आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे लाइंस नहीं होते, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रक्चर, ओके, सिलेंडर, ये सिलेंडर के फॉर्म में रहते, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर्स आर यूज टू इंजेक्ट, बायोमेडिकल्स में यूज किया जा रहा इसको, इसके अंदर जो है कैंसर की मेडिसिन इंजेक्ट करके पेशेंट्स के बॉडी में ये इंजेक्ट किया जा रहा, नैनो ट्यूब्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक, तो दे हैव देयर ओन प्रेजेंटेशन। कबीर खान, लैब एक्टिविटीज, यस सर प्लीज, आई एम गोइंग टू शेयर। रोहन गोड, N2O2 explanation. Okay, N2O2, okay, I'll do it. Okay, let's wait. Let's start, huh? N2O2 explanation. Actually, I have a video. If you want, I'll explain it. Not a problem. Chalo, let's start. It's 6:26. First, let's start with important questions. I'll once read out the important questions, my dear. मैं already LMR पे डाल दिया, फिर again and again आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ. Okay, uses 2 मार्क्स में, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, नैनो ट्यूब लास्ट टाइम आ गया बेटा, नैनो ट्यूब शायद नहीं पूछेगा, यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल, देखो इथाइल अल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं। ओके, यूजेस ऑफ एंटासिड्स, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, एंड देन यूजेस ऑफ ईस्टर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स है ये, एंड एवरीडे लाइफ में आप डिस्पर्शन और स्कैटरिंग कहां देखते, फिर ड्रॉइंग 2 मार्क्स में, मटेरियल्स की प्लेस में कभी कभी ड्राइंग पूछ रहा है, ड्राइंग ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये 2 एक साथ पूछता, या सेपरेटली डी ऑर्बिटल 3 एक साथ नहीं पूछता क्योंकि 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन है। एंड देन दिस मॉलिक्यूल्स व्हिच सिंस यस्टरडे आई एम बीन सेइंग, NH3CH4 H2O BF3 BeCl2, ये 5 स्ट्रक्चर्स, इसमें से कुछ भी पूछ सकता, ओके, किसी के भी ड्राइंग पूछ सकता, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एनीथिंग दे आस्क, ये कुछ भी पूछ सकता, और इसके ड्राइंग्स आपको वेस्पर्ड थियरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी से इसकी ड्राइंग है, और इसमें आप क्या करना है, इसमें बॉन्ड एंगल भी पढ़ना। अब CH4 है, मीथेन है, ठीक है, सो मीथेन का स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनता, ठीक है, सो इसमें बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री है। अब लेट्स से BeCl2 ये लीनियर शेप आता, इसमें 180 डिग्रीज आता, तो बॉन्ड एंगल भी पढ़ना और इसका शेप भी पढ़ना। इसको टेट्राहाइड्रन शेप बोलते हैं, इसको लीनियर शेप बोलते हैं, ठीक है, तो ये शेप्स भी पढ़ना है। ये 2 मार्क के यूजेस थे। 4 मार्क्स में जो आपको यूजेस या एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें मैं सिर्फ 4 आंसर्स बोल रहा हूं आपको। लेंसेस, जिसमें आपको कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव यू हैव टू राइट बोथ, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ओके, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, इसमें कभी कभी इंडक्शन स्ट्रोक भी पूछ सकता, सो इसमें बेकिंग सोडा और जो
वॉशिंग सोडा में बोला, डायरेक्टली आपको वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा नहीं बोल सकता, कभी कभी उसके केमिकल नेम्स देता। ओके, अब लेट्स से Na2CO3, ओके, सो ये क्या है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, क्या है आप पहचानना। ओके, पहचान के आई मीन लाइक आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना चाहिए। नाउ activities, okay, and one more thing in the uses, POP, plaster of Paris. Activities, 5 activities I'll tell you the most important ones, but again कि आपको अगर पहले से कुछ एक्टिविटीज आते हैं तो प्लीज रिवाइज कर लो। 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, ओके, जो लैब एक्टिविटी है, एसिड बेसिस लेसन से। देन कॉन्वेक्स लेंस, हाउ डू यू मेजर द इमेज डिस्टेंस फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लैब एक्टिविटी, 4th यूनिट। देन ओम्स लॉ, व्हिच इज V by I is constant, your potential difference V is directly proportional to current. Oersted experiment, Oersted experiment is a current carrying wire produces a magnetic field. Then rusting of iron articles, iron articles की जो rusting corrosion की activity है, test tube A, B, C, 5, ये most important है। इसके बाद अगर टाइम है, ओके, क्योंकि मैं जल्दी लाइव सेशन अटेंड कर ले रहा हूं, तो एक बार जरा रीडिंग कर लेके जाओ, वहां जाके नहीं, रिग्रेट नहीं करना। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, वो जो लैब एक्टिविटी के बाद वाली है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में लेंथ मत पढ़ो, लेंथ लास्ट ईयर आ गया, इसमें मटेरियल पूछ सकता, एक्टिविटी नहीं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इसको अच्छे से ड्राइंग के साथ, एक सर्किट डायग्राम के साथ बनाना है। तो ये थे एक्टिविटीज, जस्ट मेन 5 एक्टिविटीज, ओके, 4 एडिशनल एक्टिविटीज। इसके मटेरियल्स भी पूछ सकता, और मटेरियल के मैं लिए आपको और 3 एक्टिविटीज बोलता हूं, मेन इंपॉर्टेंट। रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके, दिस इज एक्टिविटी नंबर 16 फ्रॉम योर एसिड बेसिस चैप्टर। एंड देन इसी चैप्टर में और एक एक्टिविटी 7, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड देन ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड्स में। 4 mark questions. 4 physical methods for concentration of ore, जो yesterday last में मैं explain करा, magnetic separation, hand picking and all. Then Aufbau's principle, Hund's rule, इसको example के साथ explain करना। Hund's rule में कार्बन का example, नाइट्रोजन का example, दोनों examples पढ़ लो, sometimes they are asking 2 examples in 6 marks. 4 में पूछा तो एक ही example, Pauli's exclusion principle. Then ionic bond, very important my dear, ionic bond, NaCl, formation, bond formation in NaCl, या फिर ionic bond बोल सकता, okay? And then working of induction stove, induction stove कैसे काम करता? Then presbyopia, why does the sky appears red during sunrise and sunset? और numerical problems of mirrors, lenses, यहाँ पे mirror lenses के numerical पूछ सकता 4 marks में। electric current and chemical equations के numerical problems आपको 6 marks में आ सकते हैं। एंड देन रे डायग्राम्स कंप्लीट करने का भी पूछ सकता 4 मार्क्स में। इनकम्प्लीट आपको कुछ भी इंसिडेंट रेज दे देता, दे विल गिव यू इंसिडेंट रेज, ओके, लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, दे विल गिव यू 2 इंसिडेंट रेज एंड दे विल आस्क यू टू कंप्लीट द रे डायग्राम, ओके। समटाइम्स क्या कर सकते हैं, दे मे गिव यू दीज रेज, ओके, यहां से ये लोग इस तरह ये रेज दे सकते हैं, दे मे गिव द रेज हियर, ओके, एंड दे विल आस्क यू टू इंसिडेंट रेज इसके लिखने के लिए बोलेंगे आपको। इंसिडेंट रेज आपको पीछे लेके जाके लिखना है, ये इंसिडेंट रेज, सो इस तरह भी दे सकते हैं। देन अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में फॉर्मेशन ऑफ N2O2 मॉलिक्यूल, N2 and O2 सेपरेटली, नॉट टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं पूछता। लास्ट जो लेटेस्ट वैलेंस बॉन्ड थियरी है मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, N2O2। देन क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, 2 अलग अलग है, मैं बताने वाला हूं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, क्वांटम नंबर्स, ओके, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है 6 मार्क्स में। सेकंड प्रायोरिटी में नॉट टू टेक ए रिस्क, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BeCl2, beryllium chloride, yesterday I have explained it in yesterday's live session. And then ionization energy, electropositivity, electronegativity, atomic radius. How do these properties change in a period? Okay, आपके एटॉमिक, आपके पीरियड में कैसा चेंज होते हैं, और कॉलम में यानी कि ग्रुप में कैसा चेंज होते हैं, ये इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। ये
टेबल बेस्ड क्वेश्चंस में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे हैं, यस्टरडे के कल की लाइव सेशन में फर्स्ट थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज हाउ टू ड्रॉ अ पीरियोडिक टेबल. प्लीज रिवाइज दैट अगेन. एक बार आप खुद प्रैक्टिस करके जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स में, या फिर आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी दे सकता. ओके, वो मालूम होना जरूरी है. एंड देन ओर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स है. ओर्स के ऊपर मैं एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन की मेरे पास वीडियो है, मैं उसको पब्लिक एक्सेस पे करके आपको दे देता हूं. लाइव सेशन के बाद मेरे को रिमाइंड करिए टेबल बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट टेबल बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 6th and 7th चैप्टर. अदर देन दिस आपको एसिड बेसिस से पीएच स्केल के ऊपर भी आ सकता, ओर्स के ऊपर भी आ सकता. ओके, और मैग्निफिकेशन एक टेबल देता है, उसमें मैग्निफिकेशन के वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑल देके बोल सकता है. यस्टरडे वी डिस्कस्ड दिस कि मैग्निफिकेशन अगर m में नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि इमेज इज अ रियल इमेज, इट्स एन इन्वर्टेड इमेज. यस्टरडे आई एक्सप्लेन दैट. ओके, एंड देन 5 molecules structures which I told you, NH3 BeCl2 H2O BF3 CH4. ओके, सो इसके स्ट्रक्चर्स के शेप्स याद रख लेना, इनके बॉन्ड एंगल्स याद रख लेना. ठीक है, एंड देन एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और functional groups also you have to. Okay, for example, I've been saying if it is ROH, this is the general formula of alcohol. If it is RCOOH, it's a carboxylic acid. Okay, यहाँ पे ये OH is the functional group of alcohol, COH is the functional group of carboxylic acid. Here R is an alkyl group. So please refer this. I have a video. I'll make it public and I'll share with you. If you are interested, please reach out to me. I'm available only for 30 minutes after the live session. I have some personal work. I had to leave. मेरे को कुछ काम है, कहीं जाना है, क्योंकि मैं जब ड्राइविंग करूंगा तो I cannot comment your responses. Okay? Then electronic configurations you should be thorough with. Okay? Electronic configuration के basis पे टेबल को इस क्वेश्चन होता, और आपको principles of metallurgy में you have a small table. Okay, you have one table where they have given you data as like highly reactive metals, moderately reactive metals and low reactive metals. Please memorize this. इसको याद कर लो. Okay, अब यहाँ पे जैसा Fe, Zn, तो ये सीक्वेंस में ही याद रखना है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं. ओके, अब लेट्स से कि अगर Fe यहाँ पे पहले है, ओके, आई जस्ट वांट टू वेरीफाई इट वंस बिकॉज आई डिड नॉट हैव प्रॉपर स्लीप, so I don't want to mislead you people. Okay, so Fe पहले है या Zn पहले है? Oh, देखो, Zn comes first and then comes the Fe. So what is the difference here is, okay, Hg, At, Ag, Pt, Au, K, Na, Ca, Mg, Al. ठीक है, सो ये लिख दिया ना मैं, तो इसके बारे में बोल देता हूं आपको. ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, PbCu. ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है. मतलब इनकी रिएक्टिविटी, ये जो एलिमेंट्स है हाईली रिएक्टिव, दे क्विकली रिएक्ट विद एनी कंपाउंड्स. ओके, एक एग्जांपल देता हूं. एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, वंस दे हैव आस्क्ड दिस, मैं फिर रिवाइज नहीं करता, मैं 1 to 12 यूनिट्स बोल रहा हूं, उस पर रिवाइज नहीं करता, कि ZnSO4 प्लस Fe. एक क्वेश्चन पूछा गया था, डज Fe reacts with ZnSO4, why और why not? फिर रिपीट करता हूं, Fe आयरन, क्या आयरन ZnSO4 से रिएक्ट करता क्या पूछे, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, why? ओके, रीजन इज दैट कि Fe आयरन की रिएक्टिविटी Zn से कम है, क्योंकि Zn कम्स फर्स्ट. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe. Fe इज आयरन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से. सो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, सो आयरन जाके इससे रिएक्शन होके इसको रिप्लेस नहीं कर सकता. ओके, अब समझो कि आई हैव सम अदर रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड, ओके, प्लस सोडियम सल्फेट. सपोज आई हैव दिस, रैंडम आई एम राइटिंग. इसमें क्या होता है कि बेरियम विल बी रिप्लेस्ड बाय सोडियम. यहाँ पे आके सोडियम इसको रिप्लेस कर लेके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लेता, BaSO4, ओके, यहाँ पे बन जाता Ba2SO4. सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, सो सोडियम विल गो एंड रिप्लेस बेरियम, बेरियम को वहां से हटा देता, रिप्लेस कर देता. सो लाइकवाइज हियर
they are asking whether Fe will react with zinc sulfate, iron will react with the zinc sulfate or not. If not, why? It will not react. Why? The reason is that zinc is more reactive. अगर Fe यहां से आके zinc को यहां से अगर हटाना है, so the Fe यानी कि iron must be more reactive than zinc, but it is not. Zinc is more reactive, so this cannot come and replace that. Means ऐसा समझो कि this is a very strong guy. Okay, so एक बेंच पे बैठा हुआ है, okay, और उसके साथ दूसरे फ्रेंड्स हैं, तो ये आयरन जाके उसको पुल कर रहा, नहीं पुल कर सकता, उसको वहां से अपनी जगह पे से नहीं हला सकता, क्योंकि he is more stronger, right? अगर उसको वहां से अपनी जगह से हटा के इनको वहां पे प्लेस पे बैठना है, तो इनो ज्यादा स्ट्रांग होना है, यानी कि इनो मोर रिएक्टिव होना है, बट ऐसा नहीं है. देखो, जिंक कम्स फर्स्ट एंड देन द Fe. दिस इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी. ओके, zinc is more reactive than iron, then iron is more reactive than lead is more reactive than copper. This is a reactivity series. Okay, Hg, mercury is more reactive than silver. Okay, Vendi, Chandi, silver is more reactive than platinum is more reactive than gold. Au, aurum, gold is the least reactive. So similarly these are more important. ये ज्यादा important है, तो इन लोगों को ascending order में arrange करो बोल के पूछ सकता. ओके, इसमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. सो प्लीज मेमोराइज दिस, इसको ओके, कैसे भी करो, कुछ भी करो, इसको याद करके जाओ. ठीक है, सो ये हो गया. देन एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, राइट. सो दिस इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. या ये प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में आपको टेक्स्ट बुक में है. एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस. आई विल टेल यू वंस ब्रीफली व्हेन आई रिवाइज 1 to 12 यूनिट्स. सो एल्केन्स, एल्केन्स, अल्काइंस, इसका टेबल, इसके जनरल फॉर्मूलाज वो याद रखो. इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी आते हैं, और कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं. आई थिंक आई एम डन. आई टोल्ड यू अबाउट, इजंट इट? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड ऑल आई स्पोक अबाउट. सो और 2 मार्क्स के व्हाट हैपेंस इफ वाले क्वेश्चंस में नहीं बोला, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, देयर आर मेनी 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 क्वेश्चंस. ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं. लैब एक्टिविटीज भी बोल दिया मैं भाई. I have just discussed about lab activities. Queen 911 periodic table yesterday I explained, my dear. I cannot repeat. Okay. So कुछ बच्चे, some students who have joined new for the first time. So yesterday, previously what I have explained, I cannot repeat it. I have a throat infection. After this, okay, session, please message me, comment me. I'll share the link. Don't worry. Alkanes, alkenes, Abdul J8S3C, I'm going to explain. Okay, now let's begin without wasting time. So quantum numbers, okay, developer X69, quantum numbers I'll explain you once. Electron affinity also, Nawaz Khan, I'll tell you. Don't worry, when I come I'll tell you. Okay, N2O2, yes, I'm going to explain. Ab ruk jao. Okay, ओके, यहाँ पे नॉलेज, ज्ञान बांटा जा रहा है. कोई भाई बोल रहे हैं यहाँ पे सो हा NSK, या बहन है, भाई है, प्रिडिक्शन दे रहे हो नो. पूरे पेपर में 4 मार्क्स का टेबल बहुत ज्यादा हार्ड आता कहते हैं, 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल हार्ड आता, 2 मार्क्स में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ट्रिकी आता कहते. थैंक यू, ज्ञान बट रहा है भाई, ले लो. ओके, चलो. दर्शन, हाइड्रोकार्बन्स, आई हैव एक्सप्लेन माय डियर. दर्शन, आई विल मेक अ वीडियो पब्लिक एक्सेस. Please message me after this. I'll share with you. Okay. Now let's begin without wasting our time. Let's start with Unit 1. Unit 1, concave mirror and convex mirror. Okay. Mirrors important है. Mirrors के ray diagrams important है. ठीक है. आपको concave mirror ray diagrams are very important. They'll not ask you convex mirror ray diagrams. Okay. How to do it? Be careful. This point is your pole. Take 2 centimeter. Every sentence that I'm going to say now, every statement, please catch it up. Okay, stop useless messages. मेरा सेंटर एक रूम में है, तेरा सेंटर कहाँ है. It is waste. और वो दूसरे बच्चों को भी तकलीफ हो रही है. They can't comment और उनकी comment skip हो रही है. और मैं वो रबिश पढ़ के मेरा सर दर्द हो रहा है. अगर आप अगली बार, आई एम थिंकिंग बायो सोशल इसके लाइव सेशंस में नहीं करने वाला हूं, और मैं पूरों को नोट कर रहा हूं. वहां पे पूरे नेम्स आ रहे हैं मेरे को. मैं एक काम कर दो कि नेम्स में नोट कर लिया. मेरे को आप यूट्यूब पे जब कमेंट करते हैं, आपको वहां चैनल से डिलीट कर देता हूं मैं आपको, इफ यू डोंट स्टॉप नाउ. यहां देखो बच्चों, जो इंटरेस्टेड है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, कॉन्केव मिरर, यू हैव टू यूज, ओके, F
सी आपको ड्रॉ ये डालना है, क्या करो, सी 4 सेंटीमीटर ले लो, हाँ रिमेंबर 4 सेंटीमीटर, नॉट इवन 6 सेंटीमीटर, प्लेस सफिशिएंट नहीं होती, 4 सेंटीमीटर यहां पे एक पॉइंट लगा के आप कंपास से एक आर्क बनाओ, ठीक है, कंपास से, हैंड ड्राइंग नहीं करना भाई, पेंसिल से ड्राइंग करो एंड पुट दिस ऑल विद द पेन। सो 4 सेंटीमीटर पे उतारो, सो ये 2 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक स्केल ले लो, दिस शुड बी 2 सेंटीमीटर, it has to be 2 and this will be 4 centimeter. This is called the distance from pole to the focus, focal length बोलते हैं। The distance from pole to C is referred as radius of curvature बोलते हैं, okay? अगर आपको information कहीं पे आपको numericals में radius of curvature बोला 6 centimeter and all, suppose they said like radius of curvature is 6, it means focal length will be half of it, r by 2, that is 6 by 2 is 3 centimeter. Your focal length must be 3. I'm talking about numerical problems or somewhere when they specify radius of curvature. Just for a drawing sake, I'm saying take r as 4, so your focal length will be 2 centimeter. Now, when you're drawing any object, I cannot show you all. I'll just show you one. When you're drawing any object, and especially, you know, when you're drawing an object between P and F, okay? P and F object को कभी-कभी आपको draw करने के लिए एक diagram बोला, तो they may say P and F नहीं बोलते. They may say mirror and focus. Okay, they may use the word mirror and focus. अब मैं आपको जो बता रहा हूं, these are going to be very very helpful. Okay, mirror and focus के बीच में, so ये pole and focus भी बोल सकते हैं, इसको mirror और focus भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे if you have drawn an object, you are going to place an object here between this, so you are going to take one parallel ray from here, incident ray. So when it reflects, it will pass through F, okay, and then you will take one more ray in the direction of C. You will take it in a way that it is coming from C. आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये C से आ रही है, ये actually यहाँ से लेते हैं, आप यहाँ से लेते, इस reflected ray goes back, ऐसे जाती है. So you can see that these both are diverging. These both rays are diverging. But when you virtually extend, ये line extend करना, without this आप इधर नहीं लगाना, ये line extend करें, so they both meet here. तो ऐसे dashed line लाके आके extend करना चाहिए. So it will form a very enlarged virtual image. Behind the mirror, not beyond the mirror, behind the mirror, it will form a virtual image. And you have to write the characteristics. I'll show you only for this. You have to write here characteristics of an image. So in characteristics of image, you will be writing nature of an image. So what is the nature of this particular image? It is virtual. Write it in a full sentence. The image formed is a virtual image. Okay. Then orientation. How is it? Orientation, it is erect. Okay. It is erect in the sense, if it is above the principal axis, it is erect. If it is below the principal axis, it is inverted. So this is erect. Okay. Size, highly enlarged. Compared to the object, it is highly enlarged. Okay. And then position of the image. So where is it? It is behind the mirror, not beyond the mirror. Okay. So draw a diagram. As I told you, take an compass and draw an arc. 4 centimeter ले लो, क्योंकि 6 लेने से problem क्या हो रहा है? When you take 6 from here, so sometimes you know images are going out of your paper. If it is virtual image or some parallel rays वगैरह कुछ भी आ रहा है, beyond C images आ रहे हैं, so they are going out of the paper. तो इसीलिए better you take 4 centimeter. Okay, and then write the characteristics. So this was for the concave mirror. I have shown you for one position. You have to do for all the 5 positions. Compulsory, sir. Very, very, very important, sir. Okay. So from here, there is also a numerical problem from this chapter that is based on the mirror formula 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. Fine. So the problem can be from convex mirror or concave mirror. कहीं से भी problem आ सकता. तो इसमें मैं आपको sign convention बता रहा हूँ. Sign convention is important. Sometimes they are asking you to write the sign convention as well. Okay, sign convention will be simple. Okay, let's say they gave focal length as some 3 centimeter. Object is placed at a distance of 5 centimeter. Okay, find the image distance. Suppose they said image distance. So we have to write the sign convention. The first point in the sign convention says that all the distances must be measured from the pole. Okay, you have to measure all the distances from the pole. पहले ये देखो,
ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो आप यहां से आता कि 3 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करना। अगर बढ़ के दिए 10 20 दिए तो डोंट वरी, 20 अगर दिए तो 20 को क्या करो आप 10 नंबर 10 से डिवाइड करो। सपोज दिस फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 20, some big value, don't worry, you cannot draw 20. What you do, you take, आप ग्राफ में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में, मैथ्स में क्या करते हैं, अगर आपको 20 जाना है तो 1 2 3 पे 20 नहीं जा रहे, सो यू विल टेक लाइक 5 10 15 20, कैसा लेते हैं वैसा ले लो। सो इफ इट इज 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10 2 जा, सो इट इज 2, सो टेक f as 2, ओके, एंड दिस as 4, यानी कि ये 20 होता है, ये 40 बनता है आपको, ऐसा स्केल लो, ओके, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। So this will be 20 and this will be 20 40. Now come back. F was 3 centimeter. In this case, F was 3. So focal length 3 centimeter you have to draw. Then this becomes your up to center of curvature, that is radius of curvature will be 6 centimeter. So now we have to place an object U. Object is at 5 centimeter. So 5 centimeter means 6 is up to here. So 5 centimeter will be somewhere here. Okay. So between F and C. ठीक है, सो यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको डायग्राम भी बनाना है मिरर्स और लेंसेस में। चलो, अब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ओके, इंसिडेंट रे अगेन और रिफ्लेक्टेड रे, it's reflected ray, okay, will be somewhere over here. There'll be, if an object is between F and C, the image will be beyond C, and it will be enlarged, it will be bigger, Now the concern was, what I was trying to tell you is sign convention, how to take the sign convention, positive, negative, what to take. See, the first point says that all distances must be measured from the pole, okay, pole se measure karna. Second says that the distances that are measured in the direction of incident ray will be positive, otherwise negative, okay. There is one more convention. First let us take this too. So all distance must be measured from the pole. Focal length is the distance, we have to measure it from here. We have to measure it from pole to the focus. You are measuring in this direction, pole to the focus, you are going in this direction, so you can see that this direction is opposite to your incident ray. Incident ray is going in this direction and you are measuring in this direction, so this is opposite direction. So if it is opposite direction, you should take it as minus. If it is along the direction of incident ray, then it has to be positive, okay. Then object distance, so where is an object here, object is here, so what you do is, like, again you have to measure from the pole nunchi aise jana hai, so again you are going to the object, okay, in this direction which is opposite to your incident ray, so this will also be negative, okay. And image we have to find out, we have to calculate. Can you just tell me where is the image formed? Here is the image formed, I. If you have to find it and you will get the positive negative value by putting it in the formula. But again what it will be, I'm showing you, I'm predicting you, I'm showing you how to predict. You are measuring it from the pole, you are going in this direction for an image, so again you can see that this direction is opposite to the incident ray. This was the direction of incident ray, so this is also going to be negative, okay. ये भी negative आएगा, randomly I'm writing some value, ठीक है. So this was a sign convention, fine. And one more sign convention, in this one sometimes they may also ask you to find the magnification. This was the mirror formula. They'll ask you to find magnification. The formula for the magnification is m equal to minus v by u equal to hi by h naught. You will not use both, okay. They may give you height of an image object. Height of the object means they will not use the word height of the object, they'll say size of the object, okay. Let's say size of the object is 4 centimeter, find the height of the object, they may ask you, okay. So for this, in order to do this, आपको अगर ये निकालना है height of an image, okay, object size is given, then how to find out is take only this part, okay, minus v, they are saying v already is minus 8, so write it minus 8 here, by u was minus 5 equal to hi is not known, we have to find out by h naught is 4, so minus of minus is plus 8 by minus 5 equal to hi by
4. Cross multiply this, 4 8s, okay, is 32. 32 by 5 is equal to HI. Cancellation is not possible. Divided, you are going to get some 6.4. So your HI is 6.4 with minus 6.4. Okay, so height of an image is enlarged, and minus means it is inverted. Okay, inverted उल्टे inverted रहा है तो आपको image की height negative आती. ठीक है, getting my point? This is how you have to do. Fine. So this was all for a concave mirror numerical problem. Similarly, you have to do for convex mirror. And remember, only in this case, suppose if you are getting a virtual image here, then the image distance, this is an image distance V is going to be positive. Whatever the image distance is, we'll be taking it as positive if the image is virtual image. Why? Because if when you are measuring from the pole, you are going in this direction, which is same along the direction of your incident ray. Fine. Now, concave mirror we are done. Convex mirror, you may get a numerical problem. Also in the convex mirror में भी numerical problem आता आपको. ठीक है? So just I'll show you quickly. Here actually focus will take here in this, because object may be placed here somewhere. I'm showing you same formula, everything same. I'm showing you only the sign convention. For an object placed here, let's say this mirror. अच्छा एक important चीज है, ये लोग कभी कभी क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट आपको मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर नहीं बोलते, ये याद रख लो. कॉनकेव मिरर is referred as a converging mirror. Please remember this, converging mirror. Okay, and convex mirror is called diverging mirror. After once I finish writing, take the screenshot. Okay, concave mirror is called converging mirror. Why converging? Because the incident rays will meet after reflection. All the incident rays will meet at one point. They converge. That's what it is called, converging mirror. Huh? And convex mirror is referred as a diverging mirror, because see, this incident ray will diverge. ये diverge हो जाती. So इसको आपको क्या करना पड़ता है? You have to extend it. Okay, let's say one more ray. So it will also diverge. If you take it in the direction of, okay, if we take an incident ray in the direction of our center of curvature, it will not diverge. ये वाली ray diverge नहीं होती. बाकी अब जो भी rays लेते हैं ना, ये सारे diverge हो जाते हैं. So अब ये देखो. So we have taken one incident ray in the direction of C. Okay, this was another ray which was diverging. So इसको virtually आप extend कर लो. इसको virtually extend करो. So you can see that this black line and the red line are intersecting here. So a small image will be formed here. This is not exactly correct. I'm not taking it to the scale. I'm just trying to show you the sign convention. So image for convex mirrors, always the images are erect, okay, and they will be diminished small images, erect images, and behind the mirror. Okay, now let's look at a sign convention. Let's suppose F value is 4 centimeter, V value is some 3 centimeter, U value is some 6 centimeter. Randomly I'm writing. So now let's look at the sign convention. F focal length. This is your pole. All the distances must be measured from the pole. Okay, focal length यहाँ पे calculate करते, इधर नहीं, क्योंकि curve इकड़ होती है, curve यहाँ हो रहा है. So you are measuring in this direction. So this is alongside your incident ray. इधर incident ray तो part होती है, incident ray के साथ में direction है, ऐसे जा रहा है. So this will be positive. Okay, object distance. Object is here, right? So it's going to be negative. There are some tricks to remember, but last minute पे आप tricks भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये main rule बता दे रहा हूँ. इतने बार बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए. Image distance. Okay, image distance. Image is formed here. I. Image. You're measuring from this point in this direction, right? So you are measuring along the incident ray. Incident ray तो part 2. Incident ray के साथ हम measure कर रहे हैं. So it is also going to be positive. Okay, this is for sure true for convex mirror. For any object, any position of an object in case of a convex mirror, both the values are positive, F and V. Only U will be negative because it will be on the other side of a mirror. ये एक नेगेटिव आता, बाकी ये पॉजिटिव आता. सो फर्स्ट चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट है. मैं मैग्निफिकेशन बोल दिया, आपको कैसे ड्राइंग करना वो भी बोल दिया, दोनों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बता दिया. ठीक है, और ये अच्छे याद रख लो. ठीक है. नाउ यूनिट 2 balancing chemical equations. Yesterday I have shown you balancing chemical equation, yesterday's live session. That is important. Please go through that. Okay,
Yesterday's live session लास्ट में मैं बैलेंसिंग इक्वेशंस बताया, अगर कोई बच्चों को नहीं मालूम है तो वहां पर रीच आउट कर लो, या अदरवाइज आई शो यू वन. 2 marks में sometimes they may ask, or in part B they may ask. I'll just randomly pick up one equation. I'll show you how to balance it. Mostly they will not give you the skeleton equation. ये लोग skeleton equation नहीं देते, आपको equation लिखना है, skeleton equation, और उसको balancing करना है. Okay, I'm writing a random equation. NaOH plus Zn. It's a very simple one. Na2 Zn O2 sodium zincate plus H2. Okay, दिन लो एम ले दो, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल वाला इक्वेशन में पिक करा, क्योंकि yesterday I have explained 2 balancing equations, so please find it, go and check the live session. What you have to do is you have to write element. Try करो यार, आपको at least okay marks मिल जाते हैं कुछ करने के लिए. Then reactants, which is LHS, this is RHS. Please don't write LHS, RHS. You can write it, but it is recommended to write reactants and products. So what are your elements here? Na, sodium, Na, then O, oxygen, then hydrogen. Okay, what else? Zinc. After writing this, write the number of atoms of sodium. How many atoms of sodium do you see here? 1. How many atoms of oxygen do you see here? 1. Hydrogen 1. Zinc 1. Come down here. How many sodiums? 2. Zinc 1. Oxygen 2. Okay. Hydrogen 2. Okay. Are they balanced? They aren't, except sodium, zinc. Okay. Zn. The rest all are not balanced. So what it is, and remember, the numbers that are written here are called subscripts. They represent the number of atoms. Okay. So when there is no number written, so it is by default 1. We should understand that. So 1, 2, these are atoms, number of atoms. You cannot change anything here. If you want to match these, यदि 2 उनटे इसको भी 2 बनाना है, तो इसको भी 2 बनाना है, तो आपको यहाँ change नहीं कर सकते. What all you can do is you can write the numbers here as coefficients. Mathematically, as we write coefficients, if I have like 4x square in it, 4 is a coefficient, so coefficients can be changed. So what can be done? Let's say sodium is 2 here, it is 1 here. In this case, it is 1. So to make it 2 बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 we cannot write. As I told you, you can write 2 here. How do you know that you can write 2? Because it was 1. 2 1 is 2. So this will become 2. Okay. So now this has become, sodium has been balanced 2 2, same number of atoms. Similarly, oxygen was also changed. 2 1 are 2. Oxygen is also 2 now. Okay. And hydrogen 2 1 are 2. Hydrogen is also changed to 2. You can see that 2 2 2 2 2 2 1 1. It is balanced. This was very simple. I picked up. This is a trial and error method. What all you have to do is, first you write this equation and okay, write here as skeleton or skeletal equation, skeleton chemical equation or skeleton equation. Put the table, and what I have made the changes, do it below. Okay, it will have an impression. So this was about the chemical equation. Then moving forward with the third unit acid bases. In that, there is nothing that I can explain, just I'll revise the pH scale once. pH scale, it will have values 0 to 14, pH values 0 to 3 are considered to be strong acids. Okay, you will have the numbers like 1 2 with points, then 3 up to 7, yani excluding 7. Don't include 7. From here to here are weak acids. 7 to 11, excluding 7, 7 is neutral. 7.1 onwards, they are weak bases. These are bases. Actually, from here to here are bases. Among them, these are weak bases. From here to here are acids. Then 11 to 14 are strong bases. Fine. So what they'll do is, they'll give you some chemical name, like A, B, C, D in the table. They'll give you the pH values randomly. Let's say this is 7.3, this is 1.4, okay? This is like 3.6, this is like 4.3. So what is it? They will ask you, okay, is D, what is D? Is it an acid or a base? Is it a strong or a weak? Its value is 4.3. So where does the 4.3 comes? Here, between 3 and 7. So it's a
group of weak acids. So D is a weak acid. B is 7.3. So 7.3 falls under this category of 7 to 12. So it's a weak base. So this is how you have to do it. Okay. Then one more very important जो lab activity है वो देखो वो क्या है. It is a reaction and activities presentation. Activities आपको अच्छे से लिखना है भाई. First you have to write your aim. Okay. Then the materials. Better use the word material required. Don't just say materials. Material required. Then procedure. Okay. Procedure has to be written in points, please. Procedure kind of things has to be written in points. Other things where you are explaining any definition, statement, so that should be in the paragraph form. Otherwise, this must be in the points. Okay? जहां पे आपको साइड हेडिंग्स आते हैं उसको आप पॉइंट्स बना के लिखना है. Okay? और प्रोसीजर्स जाए वहां पे आपको पॉइंट्स लिखना है, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल. अदरवाइज लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से Loops law, junction law, if you are writing in a Kirchhoff's law. So Loops law side heading, Loops law, and then you have to write about the Loops law. Don't put it in a points. Junction law. Then in the paragraph form. Okay. Myopia you are writing. So myopia is not a procedure. Okay. So there is no points. You have to write it in the form of a paragraph. Paragraph में लिखना है. Bohr's model लिख रहे, Bohr's के postulates लिख रहे, Bohr's की theory लिख रहे. It should be in the points. Likewise you have to do. So procedure. Then your observations, okay, and precautions if any, some okay, this thing activities have precautions, and then your conclusion or inference or result, whichever word you want to use, you can use inference, conclusion or result. Okay, this is your page. And drawing, where should we draw? Drawing ekkada ravali. Drawing should not be after your answer. Okay, they'll not consider, they'll not give you marks if you do so. The drawing must be within your procedure. First procedure लो, इकड़ drawing चेयंडी, यहाँ पे drawing बनाओ, whatever the drawing is, please make the drawing over here, okay, and then write the procedure. And labeling also, you have to label them, properly labeled, okay, अच्छे से label करना चाहिए, okay, drawing must be with a pencil, labeling words, when you are writing the words, you should use a pen. But one more thing, for the side headings you can use a black pen, black ballpoint pen, and you can write the points with a blue pen. That can also be done, but don't mix while writing half paragraph with the blue, half with the black. ऐसा नहीं करना, this is wrong. For side headings you can use one particular color, and for the text you can use another color. Now come back. So what I was talking about, reaction between acid and a metal. Okay. Reaction between acid and a metal. So here the acid is HCl and the metal is zinc. When the zinc reacts with HCl, okay, so it's going to replace, zinc is more reactive than hydrogen. Zinc will replace this, so it will form a compound zinc chloride, ZnCl2. It is 2 Cls, 2 ones are 2, so it will form a compound ZnCl2 plus H2 gas will be evolved. Okay, whenever the gas is evolved, write like this. And the students who are 40 and 40 aspirants, if you want to have an impression, please write the state if you can. Hydrochloric acid, it is in the aqueous form. Zinc, okay, is a metal. It is in the form, it is a solid metal. H2 is a gas. You can write that. So here you can see that in this reaction, acid has reacted with a metal. इसका generalization भी लिखना आप, okay? Because this is not just one acid or one metal. It could be anything. Acid plus metal. What it has formed? A salt, zinc chloride. Remember, chlorides, sulfates. Okay, the compounds that contain sulfates, metal sulfates. Okay, like barium sulfate, magnesium sulfate, and calcium carbonate. जो carbonates होते, metal carbonate. Ca is a metal. Carbonate होगा या सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा, तो these are salts. ये salts है, तो आप यहाँ पे लिखो salt plus hydrogen. This is the generalization reaction. Please write this generalization reaction as well. Okay. Sometimes they may also ask you if they are specifying instead of hydrochloric acid, they may specify H2SO4, sulfuric acid. Instead of zinc, it could be zinc here,
और इट कैन बी कॉपर एज वेल, कॉपर भी हो सकता है क्योंकि कॉपर भी तो मेटल है. So copper will replace this hydrogen. So copper will come here. It will become CuSO4, copper sulfate plus H2 gas. Okay. So again, same generalization you can see. This is an acid. Okay. Cu, copper is a metal. It is forming sulfate, as I told you, is a salt plus hydrogen gas is evolved. So you can have this generalization. Okay. So this is one of the important that I wanted to discuss with you. So I had, then moving forward to the fourth unit. There are so many things in this unit still. I cannot revise everything. I'm just touching only what is important. दूसरी चीज़ अभी थोड़ा important भी है. अब हम फोर्थ यूनिट पे जाते हैं जहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है. सो लेंस की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू हैव टू टेक दिस रिप्रेजेंटेशन. व्हेन इट इज ड्राइंग दे विल आस्क यू ओनली फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्केव लेंस ड्राइंग्स मोस्टली दे मे नॉट आस्क. प्रॉब्लम्स में पूछता. ओके, सो यहाँ पे देखो, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस. अगेन यू हैव टू यूज अ स्केल. यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर ही लेना, नो 3 एंड ऑल, क्योंकि आपको अदर साइड पे भी उतारना है. मिरर में ऐसा नहीं था, यहाँ पे आपको दोनों साइड लेना है. सो हियर विल बी टेकिंग इज F2, C2, F1, C1, 2 centimeter, 2 centimeter, 4 centimeters, here also 2, 2. Okay, so wherever you are placing an object, let's say an object is here at C or beyond C, so you have to take one ray parallel to the principal axis. Okay, this goes like this. It's going to pass through the focal point after refraction, and one more ray you have to take. That should be through your optic center. Lens के लिए हम लोग optic center बोलते हैं इसको, mirror में pole बोलेंगे. So it goes here like this. So the rays that are passing through the optic center are always undeviated. Okay, they don't deviate. So ये देखो, ये exactly मैं scale लेके नहीं बना रहा हूँ तो इसलिए ऐसा आ रहा. Actually ये आपके center of curvature पे जाके मिलते हैं लोग. So they both meet here at this point. So just don't leave where they are meeting it. You had to draw an image. यहाँ पे आपको इमेज उतारना है यहाँ पे. ओके, सेम साइज की आना चाहिए. एक्चुअली दिस इज नॉट, आई एम नॉट टेकिंग अ स्केल, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है. आपको सेम साइज आता है, यहाँ पे आता है इन्वर्टेड इमेज आती. ओके, रियल इमेज आती. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से हियर कि नाउ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यू हैव टू यूज द लेंस फॉर्मूला. You all know lens formula. It is 1 by V minus 1 by U. I'll just refill the ink. So this is the lens formula. Now I'm trying to show you the sign convention. Darsh Jain, your comment is here, hydrocarbons. Yes, carbon compounds. I'm going in a sequence. This is a fourth unit. When we come to the 12th, okay, of course I'll tell you about the hydrocarbons. Don't worry. So this is the lens formula, and now I'm trying to show you, okay, the sign convention. Let's say focal length is some 3 centimeter. Object distance is some 3, in the sense it is 6 centimeter. Focal length is 3 here to here. So till here it will be 6. Object is placed at C in the sense it will be U. The object is at object distance 6 centimeter. Image is formed here. Okay, V. So image is also formed at 6 centimeter from the pole because it is at C. Okay, same at C पे form हो रही है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 centimeter. अब ये sign conventions देखो. Focal length. So where do we measure the focal length? In case of a convex lens, we measure the focal length on this side. Okay? मैं जो one shot video दिया उसमें मैं focal length positive लिखा, but flow में मैं hand direction इधर बता दिया, तो that is wrong. हाँ, जो भी बच्चे वो video देखे, so please make a correction. The focal length is here. Convex lens. In the convex lens, we will be measuring the focal length here. So it will be positive. यानी यहाँ पे focal length देखो, आपको यहाँ भी focal length है, यहाँ भी focal length है, but आप यहाँ measure करोगे in this side. Okay, so it has to be positive because it is along the direction of incident ray. This is the direction of incident ray, and focal length you are measuring here to here up to this point, so it's going to be positive. Now object distance, object is here. Okay, so from pole you are going to the object distance, you are going in the opposite direction to the incident ray, so this is going to be minus, negative. Image distance, image is formed here from pole to this direction, so this is alongside your incident ray direction, same direction, so it is going to be positive. Fine, so you have to substitute the values and simplify. Maths आपको आता, ठीक है, और ये प्रॉब्लम करे बाद भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, वो पूछता कैसा भी, और आपको नहीं पूछा भी तो लिखना है. Okay, now I'll change this to convex lens.
let's say this is convex lens and you are doing a numerical problem. For convex lens, I don't think they will ask you this thing. Drawings, they don't ask usually. Okay, let's say an object is here. Here is an object. Okay, so this is a diverging lens actually. ये भी याद रखना है देखो. Okay, convex lens, very important, is convex lens is converging lens. This is the reverse, ये उल्टा है of mirrors. Concave mirror was converging. Here convex lens is converging, and the concave lens, this is a concave lens, this is diverging. Remember that, they may use these words. Instead of convex lens, they may say converging lens. Instead of concave lens, they may say diverging lens. From here, incident ray you have taken here, so it is going to diverge. ये diverge होती है, तो आप इसको virtually extend करके लेके जाना. Okay, और एक रे आप ऐसा लेके गए, वो इधर जाती. So both are meeting here. So they'll form a small image here. Okay, so image is formed here. So now our concern is the distances, image, object, focal length, will they be positive or negative? So as I told you, the law, rule, sign convention. Now object is here. You have to measure from optic center. You are measuring object distance in this direction. So this is opposite to your incident ray. Your incident ray was here. You are measuring here object distance. So it is going to be negative. You have to write minus. Okay. Then image is formed here. So you are measuring again from the optic center. You are going towards the image, because in case of concave lens, remember all the images will be on the same side of the lens. लेंस के सेम साइड बोले तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे सेम साइड ऑफ द लेंस बोलना, बिहाइंड द लेंस नहीं बोलना, सेम साइड ऑफ द लेंस. ओके, सो ऑल इमेजेस विल बी फॉर्म्ड हियर. तो इधर जा रहे हैं आप तो नेगेटिव हो जाता है आपको. ओके, माइनस इमेज डिस्टेंस एंड देन रैंडम वैल्यूज. दीज आर फोकल लेंथ भी इधर मेजर करते हैं आप इसमें. In case of a convex lens we measure there, concave lens we measure here in this direction, so it's going to be negative. Okay, so now unit 5, human eye. Now I'll tell you about myopia and hypermetropia. Other topics I have discussed previously. Dispersion, scattering में 2 लाइव सेशंस में डिस्कस कर लिया, फिर रिपीट नहीं होता. मायोपिया नहीं हुआ था, हाइपरमेट्रोपिया एक बार बताता हूँ. देखो मैं आपको पहले मायोपिक आई क्या है बताता हूँ. मायोपिया, you have to draw the diagram as well. This was the most awaited. Many students were asking me. This is an eye. You have to draw an eyeball. Okay, I'll just take two, 3 cases. Maybe I have to. Right. So let's say this is a normal eye. ये normal eye है. Here is your eye lens. This is called retina. Here is your retina. Okay, that's a blind spot. Let's say here this is an incident ray. Principal axis. ये principal axis है. Here you will have L. L means least distance of distinct vision. I'm talking about myopia here. We have something called far point here. In this case, we have something called far point, and that far point is represented by letter M. M myopia. Okay, myopia is sometimes also called near sightedness भी बोलते हैं इसको. near sightedness बोले तो देखगर्दी, करीब का near का अच्छा दिखता, दूर का नहीं दिखता. myopia में दूर का नहीं दिखता. ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर पीछे बैठा तो उसको बोर्ड क्लियर नहीं दिखता. सो इसमें प्रॉब्लम क्या होता कि एवरी पर्सन विद स्पेक्स हैव अ दिस थिंग फार पॉइंट. एक फार पॉइंट रहती है. मैं फार पॉइंट आपको अभी इसमें समझाता हूँ. यहाँ पे ये देखो तो कहीं से भी आप समझो इसको रेज आ रहे हैं. लेट्स से रेज आर कमिंग हियर फ्रॉम अ इन्फिनाइट. दूर से एक ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं. ओके, दीज आर द इंसिडेंट रेज. दे आर फॉलिंग ऑन योर आई लेंस. दे आर एंटरिंग योर आई लेंस. आफ्टर आई लेंस दे ऑल विल कन्वर्ज on retina. Here they are converging, so it will form a clear image. This is the case of normal eye. This is a normal eye, healthy human eye. Okay, now in case of a defective eye, far point is M. Remember, let's say this is a defective eye. Defective eye, this is your principal axis.
this ray is going to be straight, this will be undeviated. Let's take two more rays. This is a defective eye. So what will happen is these rays, okay, let's say they are this is a defective eye. So these rays, when they pass through the lens, they will converge before retina itself. You can see that. They are all converging before the retina. यहाँ पे converge हो जा रहे. ये retina यहाँ पे है. Retina is here. Here is the retina. So they are converging before the retina. So image will be a blur image, unclear image. You cannot distinguish what exactly you are seeing. एम जो सुनमो क्या दिख रहा आपको समझ में नहीं आता. Okay? This was a healthy eye. This was a defective eye. So अब इसका correction कैसे करते हैं? How to correct is, see, this is your eye lens. Okay, so here you have to use a biconcave lens, biconcave lens or simply concave lens भी बोल सकते हैं. So ये use करना चाहिए. This is your incident ray. This is going to be correct. Okay, sorry. This is the principal axis. This will be undeviated. हाँ, principal axis आपकी center से optic center से जाती है, undeviated है. Other rays see when they are coming from a distant object. This is your far point. Okay, one more thing I have to draw. I did not draw. Let's say कि far point. This is some point, far point. Okay, I'll draw a small eye ball. So in this case, this is the far point. Okay, if you see beyond this, you are not able to see. Suppose the rays are coming from here. So the rays are coming from here. So when they pass through your eyelids, they perfectly converge on your retina. If the object is at M, you have far point. If it is beyond far point anywhere, so you cannot see a clear object. They converge before retina. Now, let's say object is at some infinite distance. Object is at infinity. Here is your far point. Here is your far point. Every individual will have a different far point. The rays are coming, these red rays. What will happen is, as this is a concave lens, is a diverging lens. Okay, so these rays diverge. Okay, so but they'll form a virtual image here at this point. Virtual image they will form here. These rays here at this point M. So this will give an impression to your eye lens. कि eye lens को impression देते हैं कि object is at M. Actually object is at some far distance which is beyond your far point. So इधर से आते यहाँ आके आपके biconcave lens पे आके it forms a virtual image at this point, a small image at this point. Okay, and this will give an impression to your eye that an object is placed at M. Okay, and these rays, the blue ones, okay, they'll go like this from your lens and they will converge on retina. Okay, so this is the corrected eye. Normal eye, defective eye, wherein if it is at far point, you can see a clear image. If it is beyond far point anywhere, not a clear image, it is converging before retina. Okay, even if it is a far point, if you are using a lens, आप अगर lens use कर रहे हो, so it is falling on retina. ठीक है? This was myopia. Now we'll go with hypermetropia, and then I'll move on with 6th unit. In that, quantum numbers, some students were asking me. So quantum numbers in 6th unit, I'll tell you. Hypermetropia, I'll not go with all. I'll just go with 2 cases of normal eye and a defective eye. We are lacking time because you also need some time to revise. Let's say this is our eye lens. Okay. So in this case, you will have a near point. You will have something called near point. Okay. A near point is represented by H. H. This is a principal axis. This is your L. Okay. And let's say this is your near point. Not here. Okay. It's a healthy eye. So even if an object is placed here at least distance, okay, for hypermetropia, I mean like normal eye है, so हमको कहीं पे भी whenever we are reading, we have to place it at a distance L for least distance of distinct vision, which is 25 to 30 centimeter away, and read it. Okay, that's an ideal distance. Suppose even a ray comes from here, incident rays, they will converge exactly on a retina and they'll form a real perfect image, clear image when you're keeping it at least distance. Okay.
just in case maybe I have to draw another one. I have to draw 3. कैसे भी उतारना ही पड़ेगा. These are far point, near point. These are least distance. If suppose if I'm bringing, if it is a defective eye, this is going to be a defective eye. If I'm keeping an object here, okay, so any object is at this distance for a defective eye. If the rays are coming like this, so after refraction they will converge beyond retina. Okay, they will converge beyond retina. Fine, and they don't form an image, clear image. So correction, what would be the correction in this case? The correction in this case would be the biconvex lens. Biconvex lens, if you use the biconvex lens, even if object is placed at least distance, okay, till here it was clear. If you go beyond L, इधर रखे तो आपको अच्छा दिखता है, लेकिन अभी आप इधर रख के भी देखो, सॉरी L पे रख के भी देखो, ये डिफेक्टिव आई है. So okay, it's going to converge, they are going to converge on retina and it will form a clear image. This is hypermetropia. Okay, so we are done with this. We'll go with the 6th unit, quantum numbers. There are 4 quantum numbers: principal quantum number, okay, azimuthal quantum number, okay, and then I'll just have a sip of water. Now my throat is just give me a second. Okay, so 4 quantum numbers. N is your principal quantum number. Principal quantum number. I'll not write the quantum number word again. Okay, and L is angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. And your ML is magnetic quantum number. Magnetic quantum number. And MS is a spin quantum number. Spin quantum number. 4 quantum numbers. N represents the principal quantum number, which is the main energy level. Actually this represents N represents the energy level. Okay, actually ये quantum numbers क्या करते? These quantum numbers describe where an electron is, what, okay, in which direction it is moving, what is its orientation, okay, in which subshell it is. ये सब बोलते. For example, let's say an electron in 3s1. Okay, N, L, ML, MS. See, principal quantum number gives us the information about an energy level, in which energy level it is. So this particular one, it is in which energy level? 3. Third energy level. ये जो यहाँ पे जो coefficient numbers होते हैं वो energy levels है आपके. It is in the third energy level. Okay. If we talk about, okay, same thing in this manner, you can see that this is your first energy level, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. These are your energy levels. Okay, spherical. Agar if you talk about Bohr's model, like so 3, n value is 3. Okay, principal quantum number. L is an angular momentum quantum number. They give us an information about the shape, okay, of a subshell. L, okay, talk about the subshells. So which subshell they are in? Okay, there are 4 subshells: S, P, D, F. Okay, for the S subshell, it is spherical in shape. P is dumbbell.
Okay, D is double dumbbell, okay. F is a complex shape. We cannot define these shapes. Okay, we cannot relate them to any shapes. Existing shapes को नहीं बता सकते. ये spherical होता, ये डंबल होता, ये डबल डंबल होता. दो डंबल्स, इसके कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है. We cannot define. They are complex shapes. So principal energy level n represents the energy level, that is 3 for this electron. Now L talks about the shape of a subshell. So what is the subshell here? S. Okay, for S the value of S subshell is 0. L values is 0. For P it is 1. For D it is 3, and for F it is 3. D it is 2, sorry. So for L, okay, L, the S value is 0. Okay. Now ML is a magnetic quantum number. This talks about the orientation at a particular time. Electron when it is revolving around, उसका orientation किधर है वो बताता वो. Okay, orientation किधर है वो. Okay, where is it? जैसे आप orientation, like in case of lenses you are talking about orientation erect, inverted, वैसे orientation बताता है इधर है किधर है. So ये इसमें values क्या आते हैं? ML will takes the values always minus L to plus L. ML values depends on the L value. So L value जो भी होती है उसका minus L से plus L होता है. मैं आपको एक P का भी लिख के बताता हूँ. So including 0 भी इंक्लूड होता है. तो अब यहाँ पे L वैल्यू 0 होती. So -0 + 0 we don't write minus, we will be taking it only as a 0. So ML value is also 0. Now MS is spin quantum number. Spin quantum number will tell us this in which direction, यानी spin कहाँ पे, is it moving in a anti-clockwise direction, electron is moving in an anti-clockwise or clockwise direction. So if it is a clockwise direction, as in this case it is one electron is always represented in a clockwise direction. For a clockwise direction we will be taking plus half. Okay, now similarly let us write this 4 quantum numbers for an electron of 3p2 के electron के लिए लिखेंगे 3p2 or 4p2, anything. P2, so 2 electrons, and a second electron we are talking about in the P. So in this n value principal energy level is 4. Okay, L value subshell is P. For P it is 1. Okay, it is 1. This was 4 and this is 1. Now ML values depends on L. L is 1. So for 1 it is -1, -1 to +1 including 0. So it will be -1, 0, +1. Okay, then spin. So as it is a second electron, we are writing it for the second electron. It is in an anti-clockwise direction. This is a clockwise. This is a clockwise direction. This is an anti-clockwise direction. So it's going to be -half. Okay. So these are your 4 quantum numbers, right? So 6 units से ये 4 quantum numbers. देखो other topics are also important, but ये मेरे को बार-बार बच्चे पूछ रहे थे और मैं एक्सप्लेन नहीं करा प्रीवियस 2 लाइव्स में, इसलिए मैं इसको अभी देखो डिटेल में बता दिया. अब हम 7th यूनिट में जाते हैं. 7th यूनिट में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपको पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है. ये टेबल मैं ऑलरेडी कल रात में एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में. ओके, इट विल टेक 20 minutes or more if I do it now. Sorry, I cannot do it. Yesterday's live session, if any students are joined just, so please let me know. I'll share the link. Okay, you can go back and see. Now, if we are coming in a chemical bonding, in that some students were asking for N2 molecule, O2 molecule. Yesterday I have explained BCl2 and all. ये देखो N2 molecule. N पहले देख लो, nitrogen. Its atomic number is 7. Its configuration is 1s2, 2s2, 2p3. Okay. There are 2 electrons in 1s. There are 2 electrons in the 2s. In 2p3, in case of a 2p3, it is 2px, 2py, and 2pz. Each of this 2p3 it is not 2p3. So each of this will have 1 electron. Okay. So this was case of a 1 nitrogen. If I explain this is enough, O2 you can do it. So this is 1 nitrogen. If we talk about N2 we are talking about like 2 nitrogen nitrides. 1 more nitrogen if I take here, it will also have the same story. 2 electrons in the 1s, 2 electrons in the 2s, 1 electron in 2px, 1 electron in 2py, 1 electron in 2pz. Whenever you are writing a single electron, you always write it as a positive one. Clockwise direction, positive half. If there are 2 electrons, one will be positive, the other will be negative. So the bonding will occur between these.
ये अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलके पेयर बनती, ये दोनों की पेयर बनती। तो इसको आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये देखो। हियर इज द px, ओके, दिस इज अ p, p इज डबल शेप, सो ये डबल शेप है, ये आपका px है। फ्रॉम वन नाइट्रोजन, अनदर नाइट्रोजन का px ले लेंगे, प्लस अनदर नाइट्रोजन, this p, so both these p's are going to overlap end on end, okay, ये px है एक नाइट्रोजन का, ये अदर नाइट्रोजन का है, then py, this is py, y axis, this is py of another one, right, then this is pz, here this is your pz, so you can see that these two end on end are overlapping end on end and they will form a sigma bond. This is called end-on overlapping sigma bond, okay, and then this one py will overlap sideways, okay, so it will form a pi bond, a weak bond. Similarly pz will also overlap sideways, it will also form a pi bond, okay. So you have to write for this as well, py and pz also. So altogether there are three bonds between the nitrogen atoms. One is sigma bond, this is there is two pi bonds, so it's a triple bond. तो ये वैलेंस बॉन्ड थियरी लेटेस्ट थियरी के हिसाब से है। इसको कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं। आपको एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बोला तो आपको ये करना था। ये N2 हो गया, सिमिलरली O2 भी रहता है, which I'm not going to show you. In electric current, Kirchhoff's law I have explained yesterday. पैरेलल सर्क्यूट्स और सीरीज सर्क्यूट भी बता दिया हमें। पैरेलल सर्क्यूट में जो रेसिस्टेंस रहता वो मिनिमम रेसिस्टेंस रहता और सीरीज में रहेगा तो मैक्सिमम। आई हैव एक्सप्लेन दिस यस्टरडे, इफ यू वांट आई विल शेयर द लिंक आफ्टर दिस। 10th यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, आई हैव एक्सप्लेन ब्रीफली एवरीथिंग इन दैट व्हाटएवर वाज इंपॉर्टेंट। 11th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हो गया, उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। लिंक है मेरे पास, वन शॉट वीडियो मैं इसके बाद देता हूँ। अब हाइड्रोकार्बन्स बोल के एंड करता हूँ क्योंकि 7:35 हो रहे हैं, आपको भी रिवीजन करना है। हाइड्रोकार्बन्स बार बार बच्चे पूछ रहे थे व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें हम आपको ओके हाइड्रोकार्बन्स, hybridization I have already explained, homologous series I have explained, isomerism I have explained, just hybridize hydrocarbons. This is the last topic. In hydrocarbons there are two types of hydrocarbons: saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon. Okay, so what is saturated hydrocarbon? If there is a single bond between carbon and carbon, carbon atoms मध्य लो, इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। अगर इनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है सो इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज एल्केन, ओके, एल्केन, एंड द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2, okay, and the general formula in this unsaturated hydrocarbon we have alkenes and alkynes, ठीक है। ये टेबल बेस्ड क्वेश्चंस में पूछता आपको, चांसेस है ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछता। अब ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, ओके। सो मैं आपको कुछ एल्केन्स लिख के बताता हूं। मीथेन, ओके, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, okay. So in this one you can notice every word is ending with ane, so it's an alkane saturated with a single bond. So and meth here represents it is one carbon atom, okay. If there are two carbon atoms we go with eth. If there are three carbon atoms it is 3, but it is 4, pent 5 carbons, x 6, hept 7, oct 8, likewise 6 I am showing. So see, now we'll write their formulas, okay. So starting here, Cn, C is a carbon, number of carbons. How many carbons are here? 1. So C1, H, 2 1s are 1, N is 1, 2 1s is 2, 2 plus 2 is 4, so C1H4. Then 8, 2 carbons, C2, H, 2 2s are, N is 2, 2 2s are 4, 4 plus 2 is 6. Then 3, so C3, 2 3s are 6, 6 plus 2 is 8. Okay, 4. This is C4. 2 4s are 8. 8 plus 2 10. Likewise, you have to go. ये alkanes है आपके, ठीक है? Now alkenes. The general formula of alkene is same रहता. अब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, so इसमें से आप
2 कम कर देना, ये जो H है ना इसमें से 2 कम कर दो, Cn is same H2n. Okay, so now write the formulas. So in this one we don't start with the meth, यहाँ पे meth नहीं रहता, we start with the eth. Okay, same eth prop but pent hex, eth prop but pent hex. Okay, I'll tell you why eth is not here, meth is not here. I'll tell you, just give me a second. After it is ene, so it will be ethene, propene, butene, pentene, hexene. Okay, so now write the formulas. So in this case, when it is eth, it means there are 2 carbons. So for 2 carbons, n is 2, H 2 into n, n is 2, so 2 2s are 4, C2H4. Prop, it is 3 carbons. You need to remember this: meth, eth, prop, but, pent, hex. Okay, prop 3, so 2 3s is 6, but 4, okay, 2 4s is 8. Likewise you have to go with. ठीक है, so now अब ये देखो कि यहाँ पे मिथ क्यों नहीं है. अगर मिथ होता so 1 कार्बन, ओके, 1 कार्बन यानी 1 H, 2 1s are 2, CH2. तो ऐसे CH2 कंपाउंड ही नहीं होता. क्यों नहीं होता? कि कार्बन शुड सेटिस्फाई इट्स टेट्रा वैलेंसी. अब देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अगर हम लगा दिए, 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती ना. कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होना? कार्बन शुड फॉर्म 4 बॉन्ड्स. देखो कार्बन में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन आके अटैच होना, 1 2 3 4. ठीक है, सो इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 इफ इट इज अ सिंगल. ओके, अगर डबल बॉन्ड है, मोर देन 1 कार्बन एटम नहीं है, यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है, तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है ना. 4 नंबर कैसे भी बनना, तो 4 नहीं बन रहा, ओनली 2, सो दे वोंट बी एनी मीथेन. ओके, सिमिलरली इज द alkyne. The formula is CnH2n-2. As I told you, every time 2 hydrogens are reduced. यहाँ पे 2n plus 2 था, वो plus 2 कम कर दो, 2n हो गया, और 2 कम करना है तो -2 करना है. I'll just show you. This also don't start with the meth. Okay, it starts with the ethyne, propyne, and likewise. Okay, so ethyne 2 carbons, so it is C2H, 2 2s are 4, 4 minus 2 is 2, C2H2. Okay, then propyne 3 carbons, C3H, 2 3s are 6, 6 minus 2 is 4. ठीक है, got it? So these are the hydrocarbons. Let us end the session. It is 7:40. Okay, if you want anything, please message me after this. Comment it. I'll share you. Passing marks भूल जाओ भाई. There are no passing marks. हाँ, आपको दोनों साइंसेस मिला के पासिंग मार्क्स होते हैं. ओनली फिजिक्स में आप पास नहीं होते. फिजिक्स एंड बायो बोथ. Numerical problems, everything. See sir, how to write diagrams if radius of curvature is given. Sir, mysteries N4S. Yesterday also I told the same thing. फिर पूछ रहे हैं आप, नहीं देता 20 सेंटीमीटर होना. ओके, अगर 20 स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं, आप कहां थे आप बोलो, बार बार रिपीट नहीं करते आप. लाइव सेशन में स्टार्टिंग में जाके देख लो, फर्स्ट चैप्टर में, बिगिनिंग में मैं बोल दिया ऑलरेडी. सॉरी, हाँ, कल भी रात में भी बोला, फिर अब सुबह में भी बोला, फिर पूछ रहे हैं आप. ओके, एवन जोडोंग, व्हाट इज योर कंसर्न? आयु पैक बताइए ना, जिसमें सबस्क्रिप्ट, रूट वर्ड, फंक्शनल ग्रुप और मदर चेन भी है. सर आप मेरे को क्या करिए, ये सेशन होते ही मेरे को आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप देख लीजिए, इसके अंदर आपको ये सब मिलते. ओके, और एल्स आई विल शो यू ओनली वन. इट इज वेरी लेट माय डियर, आप खुद भी रिवीजन करना है. आप खाली लाइव सेशन सुनिए तो आप खुद का रिवीजन क्या करते? क्या ये मैथ्स है? आप जाके वहां पे कुछ भी एक फॉर्मूला डाल के सब्स्टिट्यूट कर दिए. यू हैव टू रिवाइज ऑन योर ओन. एक कंपाउंड बोल देता हूं मैं बस. आयुपैक नेम. सर 20 सेंटीमीटर आप जो पूछे बेटा, 20 सेंटीमीटर का डायग्राम हाईली पॉसिबल नहीं देता. अगर दिया भी तो मैं 3 बार बोला, कल भी बोला, आज भी बोला, अब बोल रहा हूं आखिरी बार. ऐसा नहीं सताना. यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम अननेसेसरी. यू आर मेकिंग मी इरिटेटेड. यू शुड हैव सम सेंस. ओके, वेयर वर यू व्हेन आई सेड? अगर 20 सेंटीमीटर दिया तो उसको स्केल लो बोला मैं. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप जैसा स्केल लेते हैं, वाई एक्सिस पे आपको ग्राफ में अगर कुछ हायर वैल्यूज आए, आपको लेट्स से 90 आया, तो यू विल गो विथ लाइक 10 20 30 40 50 60 ऐसा जाते हैं आप. ओके, तो वैसे ही आप यहाँ पे स्केल ले लो, यानी 1 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर यू आर टेकिंग इट एज 10 यूनिट्स. तो वैसा अगर 20 सेंटीमीटर दिया तो आप 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स लो. सो 20 सेंटीमीटर यानी कि 2 यूनिट्स बनते. मतलब आप उसको 2 सेंटीमीटर को 10 ले लो, सॉरी
2 सेंटीमीटर को 20 ले लो, ओके अगर आपकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर बोला, जो भी बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर बोला, एज यू सेड ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो यू टेक इट एज 2 सेंटीमीटर, और अदरवाइज 20 को आप 5 से डिवाइड कर लो, इट इज 4, सो यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट एज 4 सेंटीमीटर, आपका ऑब्जेक्ट आप 4 पे लगा दो, ये 2 सेंटीमीटर लिए तो ऑब्जेक्ट आप 4 पे यहां पे लगा दो, ये 4 सेंटीमीटर होता। आप स्केल लेना सीखो, अगर आपको पॉलिनोमियल ग्राफ आता है उसमें कैसे करते हो वैसे करो। अभी मैं कार्बन हाइड्रोकार्बन्स का एक क्वेश्चन बोल देता हूं और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलते, आपको होना है तो लिंक आप मेरे को कमेंट करो, 15 मिनट्स आई विल बी अवेलेबल, नॉट मोर देन दैट, आई हैव सम पर्सनल वर्क। रात में मैं 1:30 बजे तक जाग के मैं कमेंट के आंसर्स देते गया, I have some personal work, I have to leave, I cannot further help you out with. One student asked me to show a compound that has bonds, okay, and functional groups and all, side chains. So I have picked up a very big one. So I want to check it once if it is correct. CS2 C double bonded C CS2 CH CH2 CS. Okay, let's see. The very first thing, my dear, is for writing a structure, I mean like structure का नाम लिखना है, so पहले आप नंबर्स लिखना, ध्यान दो नंबर्स लिखना। तो नंबर्स कहां से लिखना, यूजुअली नंबर्स, अब ये इतने बड़े स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, OH इज एन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड यू हैव डबल बॉन्ड्स, ओके, सो आपको फंक्शनल ग्रुप है तो जहां फंक्शनल ग्रुप है वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना। अब जस्ट इन केस अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स नहीं रहते, सो यू हैव गॉट साइड चेन्स एज हैलोजेंस क्लोरीन्स एंड डबल बॉन्ड, तो अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको यहाँ डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करना, यहां से 1 2 3 देना, बट वेराज यहाँ पे साइड चेन्स थे, सॉरी फंक्शनल ग्रुप्स वर हियर, आई रिपीट अगेन, नंबर्स फंक्शनल ग्रुप से लिखना, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है तो फंक्शनल ग्रुप लिखना, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का है वहां से नंबर्स करना, ठीक है। और आयुपैक की मैं छोटी 1 शॉट वीडियो है वो दे देता हूं, आपको होना है तो प्लेबैक भगा के देखो स्पीड पे। अब यहां से नंबरिंग करना है आपको, नंबर 1 दिस कार्बन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हो गए, नंबर्स 8 हो गए ना, तो इससे आप पहले वर्ड रूट लिखना। देखो नेम में 3 पार्ट्स होते हैं, ओके, वन इज वर्ड रूट, द अदर इज प्रीफिक्स एंड द अदर इज सफिक्स। व्हाट कम्स इन द वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या आता, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स है वर्ड रूट में लिखना। सफिक्स में क्या लिखना है, टाइप ऑफ बॉन्ड and functional group. You have to write functional groups. In prefix, you have to write halogens or alkyl groups. ठीक है, तो ये याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो थोड़ी देर के लिए। Word root, first you have to start with the word root. Word root is number of carbon atoms. So how many carbon atoms are there? 8. You have counted, 8 are there. So for 8, you are going to write a word oct. Okay, oct लिखना है, 3 letters only, oct, pent, hep, पूरा नहीं लिखते, ओके, 3 या 4 letters लिखे जाते हैं, एन इन नहीं लिखना अभी। अब इसके बाद क्या करना, ये देखो आपका वर्ड रूट हो गया, दिस वन। नाउ कम्स द सफिक्स। इन द सफिक्स फर्स्ट यू हैव टू चेक फॉर टाइप ऑफ बॉन्ड। सो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, सिंगल बॉन्ड तो यूजुअली रहता, उसके अलावा डबल ट्रिपल है क्या देखना, तो यस डबल बॉन्ड्स आर देयर, ओके, डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है वी राइट एन, डबल बॉन्ड वी राइट इन, फॉर ट्रिपल बॉन्ड वी राइट आइन, ठीक है। सो बट वेराज अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा तो ये ई ड्रॉप करना, ओके। एनीवेज अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपके पास, डबल बॉन्ड्स आर देयर, सो यू आर गोइंग टू राइट इन, ओके। एंड वेयर आर दिस डबल बॉन्ड, this double bond is attached to the 6th carbon and 7th carbon, so you have to specify 6,7, okay, die,
ene. You are going to write. I'll tell you why. What is that? You had double bonds here and here. For double bonds, we are going to write ene, ene, ene. So there are two double bonds. That's what we are writing di. Okay? अगर एक double bond होता है तो we don't write di. We write simply ene. Okay? तीन double bonds है, तीन double bonds है तो ट्राई लिख लेना. एक है तो कुछ भी नहीं लिखना. मोनो नहीं लिखते. अब ये दो डबल बॉन्ड्स कौन से कार्बन को अटैच थे? 6th कार्बन 7th कार्बन. दैट्स व्हाट वी रोट 6 7. सो नंबर्स है तो नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आना. नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन. ठीक है? तो ये था आपका डाइईन. बट आई टोल्ड यू कि इफ इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, यहां पे आपको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ रहा, सो फंक्शनल ग्रुप आया तो ये ई नहीं लिखते, किस में भी ई नहीं लिखना. सो वी विल ड्रॉप दिस ई because there is a functional group. Okay, so we don't write that. So what functional group it is? OH. OH is for alcohol. So for alcohol we use the last two letters OL, all. Okay, so all. So two and alcohols, where are they attached? To first carbon को एक alcohol है, second carbon को एक alcohol है. So आपको यहाँ पे लिखना है 1,2. Okay, 1,2 di, two alcohols. So you are going to write all. Same like this. So जैसा 6 7 को डबल बॉन्ड्स थे वैसा फर्स्ट और सेकंड कार्बन्स को ओके अल्कोहल्स अटैच्ड है. टू अल्कोहल्स है इसलिए डाई ऑल. नंबर वर्ड हाइफन, नंबर वर्ड हाइफन, नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा. ठीक है? नाउ कम बैक. डन विद द सफिक्स पार्ट. प्रीफिक्स. इन प्रीफिक्स यू हैव टू लुक फॉर हैलोजेंस एंड अल्काइल ग्रुप्स. सो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स तो नहीं है. अल्काइल ग्रुप्स क्या रहते हैं? कहीं पे भी अगर तुमको नीचे ऐसा CH3 वगैरह रहता मोस्टली, CH3 है तो मिथाइल लिखना. ओके, अगर एक है तो मिथाइल लिखो, दो है तो डाई मिथाइल लिखना, कौन से कार्बन पे अटैच्ड है उसका नंबर लिखना. तो अभी मिथाइल नहीं है यहाँ पे. सो फिर अल्काइल नहीं है तो क्या है? हैलोजेंस है. हैलोजेंस मोस्टली यहाँ पे क्लोरीन Cl या ब्रोमीन Br देता. सो अब यहाँ पे क्लोरीन्स यू हैव गॉट 2 क्लोरीन्स. ओके, where are they attached? They are attached to the 5th carbon को 1 है, 6th carbon को 1 है. So यहाँ पे आप लिखना 5,6. Okay, 5th carbon and 6th carbon. Okay, so there are 2 chlorines. So that's what we write di. And for chlorine we use the word chloro. Okay, for chlorine we use the word chloro. So it is 5,6, 5th carbon, 6th carbon, 2 chlorines. So dichloro, oct. 2 6 7th carbon, 6th and 7th carbon double bonds, 2 double bonds, 2 en. We don't write e because there is a functional group. अगर अल्कोहल ऐसा functional group नहीं है तो ene ene लिख देना पूरा. ठीक है? और फिर functional groups दो थे, alcohols थे OL, 2 थे इसलिए di और फर्स्ट और सेकंड कार्बन को थे. ठीक है? So we will end up, I'm not going to look at anything. It is 7:51. It's very late. Okay? ठीक है? So best of luck. आपको मैं जितना पढ़ाया उसको थोड़ा सा अच्छा ध्यान से देख लो. आप लिख सकते हैं. Fine. If you have any concerns, I'm there available up to 8 minutes. Up to 8 o'clock, I can respond to your comments, not beyond 8 o'clock. Fine. So best of luck. My blessings are with you all. You are going to do well.